about the product recall. Okay, so we are talking about the product recall. So what is mock recall? Okay, so what is mock recall? Okay, are you getting what I am saying? So अभी हम देखेंगे वो क्या होता है actually. So now before moving toward the mock recall, we have to be very much uh, informed about the CDSCO. What is CDSCO? So basically, if we talk about the CDSCO, so it is nothing but the Central Drug Standard Control Organization, and that comes under the Director General of Health Services and Ministry of Health and Family Welfare. Okay, so that is called as the CDSCO guidelines. Okay, I repeat, that is the Central Drug Control Organization under Director General of Health Services. Okay, and what it carries out, it carries out the mock recall at least one batch, okay, for the product and that are being to be dispatched. Okay, and what is the best practices to choose a product where the maximum distributors are involved, and this helps to evaluate how effective the arrangements are to the executive product recall. Okay, so such a mock recall must also be carried out in the event of changes. Okay, now this US FDA product recalls are of the three types. Okay, first is the class 1, class 2 and class 3. Class 1 में क्या होता है, it includes the threat of life. अगर situation is that there is a threat of life, so it is there. So thereafter the FDA orders a consumer recall 100% effectiveness check and requires public announcements to be made about the hazards of the product. And in the class 2, what happens, these are the class 2 are the potentially hazardous products. Okay, but basically they are not life threatening in nature, and the FDA furthermore orders to recall the retail outlets, but a 100% effectiveness check is not mandatory. Okay, depending on the reasons for the recall, press release has to be done, and it is not necessary, maybe or may not be necessary. Class 3 situation do not pose a serious threat. Okay, recall is restricted to the wholesale outline outlets, and effectiveness checks are not necessary. No press release is further required. So these are the class 1, class 2 and class 3 type of the drug. Okay, now we will see व्हाट इज CFR. पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि यूएसए में जो CFR रेगुलेशंस होते हैं वो होते क्या है एक्चुअली. तो सेंट्रल फेडरल रेगुलेशन बोलते हैं. तो CFR मींस, CFR स्टैंड्स फॉर सेंट्रल फेडरल रेगुलेशंस. कोड ऑफ यूएस कोड ऑफ सेंट्रल फेडरल रेगुलेशन CFR होता है. ठीक है ना. अब यहाँ पे सब दिए हुए हैं, कंट्रीज है, इनकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं और गाइडलाइंस है. यूएसए का FDA रहता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, और उसकी कौन सी गाइडलाइंस होती है, 21 CFR होती है. कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन करके होता है, वो गाइडलाइन होती है, और उसका पार्ट होता है 7, 107 और 1270. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, हाँ. अब ये जो CFR होता है, हेलो, कैन यू हियर मी easily? Yes? Yes, Am I sir. audible to all of you? Yes? Yes, sir. Okay. So now what is CFR 7? So CFR 7 stands for agriculture. Okay. CFR 7 stands for agriculture. Okay. And thereafter CFR 107. This 107 stands for unmanned aircraft systems. Okay. Are you getting what I am saying? So that is the CFR 107 stands for unmanned aircraft systems. Okay. Transportation through that. Okay. Now CFR 1270, what it stands for? CFR 1270 stands for liabilities. Okay, liabilities that includes the obligations in form of bonds, debentures. Okay, so these are the CFR regulations. Okay, so these are the guidelines. Now Australia, so therapeutic goods administration, that is called as the TGA. Section इसका कौन सा है? 65F है of the Trade Practice Act 1974. UK मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी, सो MHRA बोलते हैं इसको अपन. सेक्शंस उसके कौन से होते हैं? 2/2, 4, 5, 7 of the European Community Act 1972 and the Directive 2001/95 EC Act on the General Product Safety. Again, the same thing happens with the South Africa. It is having the Medicine Council, okay, Medicine Control Council,
It comes under the guidelines Center 19 of the Medicine and Related Substances, 101 of the 1965, and regulations of 43 of 1 of the Medicines and the Related Substance Control Act of the 101 of 1965. In India, it is CDCSO. CDCSO, I told you, Central Drug Standard Control Organization. In its the sections with the guidelines which they follow are the para 27-28 of the Schedule M, and the conditions of the license for the defective products recall in the Rule 74J and the Rule 78I of the Drug and Cosmetic Act 1940 and rules thereunder. Agree? So all these things are there. Now let's see which are some examples of the major drug products which are recalled. That are the fenfuramine, phentermine. Okay, the company is the Vet Arrest. Okay, category anti-obesity, 1997, reports of heart valve defects. That was the reason for the recall. Now, phenylpropanolamine containing drug. Okay, so many companies were involved. The category in which they come, the phenylpropanolamine was the decongestant. Okay, and in that the incidence of the hemorrhagic stroke was there. Again, the Becol Bayer anti-cholesterol drug, 2000, death linked with the rhabdomyosis. Okay, I hope you may be knowing about the rhabdomyosis. What is rhabdomyosis? Yes. Yes. What is rhabdomyosis? What is rhabdomyosis? Muscle breakdown. Muscle breakdown, yes. Okay. Thereafter, Vioxx, that was the company under Merck. Okay, anti-inflammatory. Okay, and it was in the year 2004 linked to the cardiovascular problems and all the things you can see to it. Okay, and the recent one was the ranitidine, that was in the the several companies. Antacid was there, carcinogen, nitrosodimethylamine found in the levels crossing US FDA limits. Okay, so these product recalls were there. So product recall system अब कैसे काम करता है? So इसमें क्या रहेगा? Authorized person will initiate the product recall. Thereafter, the nature of the communication will be used to initiate the call. That includes the telecommunication, email, letters will be there. Okay. Thereafter, we will see to it. Now, the depth of the recall to be initiated, recall from the distributor, wholesaler, hospitals, retails, and the general public will be there. Thereafter, manner of receiving, segregating, and secure storage of the recall product would be there. Okay. Thereafter, reconciliation reports to be prepared, at what frequency that has to be measured. Thereafter, the steps to be taken to avoid reoccurrence of the same issue with the product. Okay, and dealing with the recalled product, reworking or the destruction as may be appropriate. Okay, so all these things you have to deal it. Okay, thereafter, handling the returned goods. Okay, so once the recall has been initiated, the process has to be monitored. And why the process has to be monitored? In order to ensure the recall is completed and within the stipulated time frame. Okay, and the check must be performed, to evaluate what? To evaluate the effectiveness of the recall. And thereafter, what you have to do? You have to do the investigation. Investigation must be carried out. Okay, and why we have to carry out the investigation? Okay, for the recall, and the remedial actions must be worked out to ensure the defect does not reoccur. Okay, okay. Thereafter, when the stock of the recalled drug is received, so it must be placed under quarantine in segregated places with no chance of being mixed up with the other product. Entry to this product must be restricted to the authorized personnel only, and samples must be drawn, and testing must be performed to identify the root cause of the defects. Okay, once it has been established, okay, what you have to do? You have to do the CAPA, that is the corrective action and the protective action. Okay, preventive action that has to be done. And based upon the investigation, what you have to do? The defective product has to be reprocessed and destroyed after due authorization, and thereafter
generally reprocessing has to be permitted only if it is sure that the product has met the quality requirements, and thereafter reworking has to be done, and reprocessed batch details must be carefully monitored throughout the shelf life, and the records must indicate the identity as a reprocessed batch. Okay. So all these things are there. I hope this is very much clear to you. It's very simple. Okay. Can we proceed? Yes, sir. Yes. Okay. Now the waste disposable, how you are going to deal with the waste disposable? So you have to follow the CGMP Schedule M of the Drug and the Cosmetic Act, in which you have to deal with the sewage and the effluents of sewage and the effluents from the pharmaceutical manufacturing units. Okay. They must conform with the regulations of the EPCA. EPCA means the Environment Pollution Control Board, and thereafter all the biomedical waste destruction should be proceed in keeping with the provisions of the biomedical waste management and the handling rules 1996. Thereafter, rejected drugs must be stored and disposed with the extra care. And why we have to do that? To prevent them from the any mix-ups or the stock meant for distribution. Thereafter, waste disposal should be there. Records must be maintained. Material awaiting from the disposal must be stored in a safe way to avoid the misuse, and also to prevent any cross contamination of the mix-ups. Okay, all these things are there. Now, types of waste. Now टाइप्स ऑफ वेस्ट में हैजार्डस वेस्ट होंगे, नॉन हैजार्डस वेस्ट होंगे, इनर्ट वेस्ट होंगे, बायोमेडिकल वेस्ट होंगे. हैजार्डस वेस्ट में क्या रहेंगे कि वेस्ट जो पोटेंशियली डेंजरस होते हैं ह्यूमन हेल्थ को, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, दे आर कंटेनिंग द स्लज और द स्लरीज होंगे नेचर में. ठीक है ना. वेस्ट में क्या रहेंगे? केमिकल प्रोडक्ट्स रहेंगे, इग्निटेबल रहेंगे, इन्फ्लेमेबल रहेंगे, कोरोजिव नेचर के रहेंगे, रिएक्टिव नेचर के. नॉन हैजार्डस में क्या रहेंगे? ये मटेरियल्स कैसे रहेंगे? दे डोंट हैव द सिग्निफिकेंट हैजार्ड एट द लेवल इन विच दे आर प्रेजेंट. फिर इनर्ट सब्सटेंसेस कैसे रहेंगे? ये जो इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं इनका कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता है और ये सपोर्टिव न्यूट्रिशन का काम करते हैं. एग्जांपल डेक्सट्रोज है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस है, और ये जब मिक्स करते हैं दूसरे केमिकल के साथ में, और ये मिक्स करते हैं फॉर हैजार्डस प्रॉपर्टीज बिफोर बीइंग डिस्पोज. ठीक है ना. फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, ये बायोमेडिकल वेस्ट को जो आप जनरेट करते हो कैसे? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन बींग्स और द एनिमल्स. जो वेस्ट जनरेट होता है उसको अपन बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं. अब ये जो वेस्ट होता है, ये जो ड्यूरिंग मटेरियल बायोलॉजिकल मटेरियल प्रोडक्शन में, टेस्टिंग में जब ये जनरेट होता है, या फिर हॉस्पिटल वेस्ट में, ये सब मेजर कॉजेज होते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट के. डिस्पोजल कैसे करेंगे आप फार्मास्यूटिकल वेस्ट का? तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? केमिकल डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, इंसिनरेशन करना पड़ेगा थर्मल ट्रीटमेंट का. ठीक है ना. इंसिनरेशन में आप क्या करेंगे? सॉलिड वेस्ट मटेरियल को इंसिनरेट करेंगे, आप बर्न करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे गैस में, और फिर जो सॉलिड रेसिड्यू रहेगा उसको एश में कन्वर्ट करेंगे. फिर जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड उसमें क्या है? डिस्पोजल करोगे सॉलिड या लिक्विड का गैसियस में. उसके बाद में जो मिक्स्ड ऑप्शंस रहेंगे डेंजर के, उसमें इमिशन करोगे पॉल्यूटेड गैस को. उसके बाद में उसके बेस्ट वेज क्या है? उनको डिस्पोज ऑफ करोगे हैजार्डस वेस्ट को एज अ बायोमेडिकल वेस्ट. उसके बाद ये मेथड कहाँ पे, इसकी लिमिटेशंस क्या है? ये हाईली रिएक्टिव केमिकल्स कंटेनिंग हैलोजेंस, हैलोजेनेटेड प्लास्टिक्स, मर्क्यूरी, प्रेशराइज्ड गैसेज होती है, या फिर रेडियोग्राफिक वेस्ट होते हैं, उनके लिए बहुत सुटेबल नहीं है. फिर जो एश जो प्रोड्यूस होती है इंसिनरेशन के बाद में, उनको आपको डिस्पोज ऑफ करना है सिक्योर लैंडफिल में, और उसके बाद में इनका अरेंजमेंट करना है टू प्रिवेंट द गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन उसने नहीं करना चाहिए. फर्दर मोर केमिकल डिसइंफेक्शन में आप क्या करोगे? इसमें आप क्या करोगे? ट्रीट करोगे वेस्ट मटेरियल को, केमिकल्स को इनएक्टिवेट करोगे, केमिकल और बायोलॉजिकल मटेरियल्स को जो लिक्विड वेस्ट में रहते हैं. फिर जो इफेक्टिवनेस रहती है प्रोसेस की, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? केमिकल जो आपने यूज किया है, concentration and nature of the contact between the disinfectant material and the waste. Agree? Thereafter अब फिर आप क्या करोगे? माइक्रोवेविंग. माइक्रोवेविंग एक और मेथड है. उसमें क्या करोगे? माइक्रोवेव रेडिएशन करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे इन्फेक्शन मटेरियल को बायोमेटेरियल वेस्ट में. एडवांटेजेस उसके क्या है? इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है इसमें, कम से कम में स्टीम इसमें इसमें जरूरत नहीं होती स्टीम की. ठीक है ना. सुटेबल होता है फार्मास्यूटिकल वेस्ट के लिए. ठीक है ना. और प्रायर शेडिंग और माइक्रोवेविंग करके अलाउ करते हैं रेडिएशन को टू कम इन कांटेक्ट विद द वेस्ट मटेरियल.
ऑटोक्लेविंग में आप क्या करते हो, सैचुरेटेड स्टीम को पास करते हो वाटर में, ऑटोक्लेविंग में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे टेम्परेचर उसमें सफिशिएंट रखते हो, और उसकी वजह से पैथोजन सबके सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये कॉमनली यूज मेथड है वेस्ट डिस्पोजल की, ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट लेबोरेटरी में इनको यूज किया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ऑटोक्लेविंग से, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं लैंड क्लेविंग में। और ऑटोक्लेविंग इज नॉट द बेस्ट मेथड फॉर केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट, केमिकल और फार्मास्यूटिकल वेस्ट के लिए नहीं यूज किया जाए, ये इसका लिमिटेशन है। सिक्योर्ड लैंड फिलिंग में आप क्या करते हो, वेस्ट को आप डिस्पोज करोगे, कैसे करोगे, बाय करोगे लैंडफिल को, उसके बाद में डेजिग्नेट करोगे उसको कंटिन्यूअस हैजार्डस वेस्ट के जैसा, फिर उसके बाद में प्रॉपरली उसको डिजाइन करोगे, ऑपरेट करोगे लैंडफिल में भी, लीड टू लिक्विड लीचिंग इनटू द ग्राउंड प्रोडक्ट। उसके बाद में क्या करोगे, अट्रैक्शन करोगे, वर्मिन लाओगे, वर्मिन पता है ना आपको, अट्रैक्शन करते हो उसका, ईवीएस में पढ़े हमने ये सब चीजें। उसके बाद में आप क्या करते हो, गैस एक्सट्रैक्शन सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल करते हो लैंडफिल्स में, और वो गैस एक्सट्रैक्शन सिस्टम क्या करता है, CO2 को बाहर निकालता है, मीथेन को बाहर निकालता है, जो एनारोबिक ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट का। उसके बाद एग्री। उसके बाद में हम क्या करते हैं, डीप बरियल करेंगे, उसमें क्या करते हैं कि वेस्ट को आप बर्न करोगे, ठीक है, वेस्ट को बर्न करोगे डीप पिट्स में, ट्रेंचेस में, और एटलीस्ट 2 मीटर डेप्थ में। उसके बाद में इंश्योर करोगे सॉइल कैसी रहेगी, परमिएबल रहेंगी उस एरिया में। उसके बाद में उसमें कोई शैलो वेल्स नहीं रहेंगे उस एरिया में, और कोई रिस्क ऑफ वाटर कंटेमिनेशन नहीं रहेगा। हाफ जो पिट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे बायोमेडिकल वेस्ट में। रेस्ट क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर कंटेमिनेशन जो हो जाएगा वो बच जाएगा। फिर जो रेस्ट रहेगा उसको आप क्या करोगे, लाइम से भर दोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, 50 सेंटीमीटर बिलो तक उसको स्टॉपिंग करोगे उसकी। उसके बाद में फाइनल लेयर जो पिट की रहेंगे, पिट है ना गड्ढा, उसको आप क्या करोगे, सॉइल के साथ में उसको कवर करोगे वेस्ट के साथ में। उसके बाद में क्या होगा, जो बरियल रहेगा, ब्यूरियल शुड बी डन ओनली इन द एरियाज दैट आर प्रोन टू द फ्लडिंग, ठीक है ना, जो प्रोन रहेगा फ्लडिंग से वहीं पे आप करो इसको। वेस्ट एनकैप्सुलेशन इमोबिलाइजेशन में क्या करोगे, एनकैप्सुलेशन ऑफ द वेस्ट में क्या करोगे, वेस्ट का इमोबिलाइजेशन करोगे सॉलिड ब्लॉक के साथ में, स्टील और प्लास्टिक ड्रम में, क्लीन ड्रम 75% कैपेसिटी ऑफ वेस्ट के साथ में। जो रिमेनिंग स्पेस रहेंगे उसको फिल करोगे सीमेंट के साथ में, या फिर लाइम सीमेंट मैट्रिक्स के साथ में, या फिर बिटुमिनस सैंड के साथ में, या फिर प्लास्टिक फोम के साथ में। फिर उसके बाद में ड्रम को सील करोगे, प्लेस करोगे बॉटम ऑफ द लैंडफिल के साथ में, और उसके बाद में जो फ्रेश सॉलिड वेस्ट रहेगा उसको कवर्ड करोगे टॉप पे। उसके बाद में जो वाटर इमोबिलाइजेशन रहेगा, इनर्टाइजेशन बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, रिमूव करने के बाद में पैकेजिंग मटेरियल, फिर जो ग्राउंड प्रोडक्ट रहेगा उसको मिक्स करोगे सीमेंट के साथ में, वाटर के साथ में, लाइम के साथ में, और उसका पेस्ट बनाओगे। पेस्ट को ट्रांसपोर्ट करोगे लैंडफिल में, और उसको पोर्ट करोगे नॉर्मल वेस्ट के साथ में एज अ सॉलिड मास। उसके बाद में जो सीवर ट्रीटमेंट होता है, इसमें क्या करोगे, लिक्विड ड्रग प्रोडक्ट को आप लार्जली डाइल्यूट करोगे, मिक्सिंग करोगे वाटर के साथ में, फ्लश करोगे सीवर के साथ में, slowly in a very small quantities. Small quantity of very diluted medicines may be flushed down fast flowing water bodies too. ठीक है, यहां तक समझा आपको? हेलो, जी हेलो, सर। समझा आपको? हाँ। अब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल यूज में आप क्या करोगे, फार्मास्यूटिकल वाटर वेस्ट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें एक्सिपिएंट्स रहेंगे, सॉल्वेंट्स रहेंगे, केमिकल्स रहेंगे, ग्रीस रहेगा, ऑयल रहेगा, उनको आप ट्रीट करोगे इन द राइट वे टू रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल्स, और अवॉइड करोगे पॉल्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर के साथ में और अदर वाटर बॉडीज के साथ में। जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स रहेंगे उसमें क्या क्या रहेगा, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करेंगे उसका, फिल्टर के साथ में रिमूव करेंगे पार्टिकुलेट मैटर को, फ्लोटिंग सॉलिड्स को, अलाउ करेंगे वाटर को टू एंटर द कलेक्शन फ्लास्क। उसके बाद में एरिएशन करोगे कलेक्टेड वाटर का, उसके बाद में फ्लो करोगे उसको न्यूट्रलाइजेशन टैंक के साथ में, फिर पीएच एडजस्ट करोगे न्यूट्रल तक 6 to 7 के साथ में, फिर उसमें लाइम ऐड करोगे, एल्यूमिनियम बाइसल्फेट ऐड करोगे, वाटर को पंप करोगे सेटलिंग टैंक तक, फिर फ्लक्चुलेशन करोगे, कोआगुलेशन करोगे। ये कैसे आप अचीव करोगे, बाय द एडिशन किसके हाथ में, आपको इसमें एलम डालना पड़ेगा और पॉली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस डालना पड़ेगा कंटिन्यूस एरिएशन के लिए। फिर कोएगुलेटेड जो मटेरियल रहेगा इन द फॉर्म ऑफ स्लज वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम ऑफ द टैंक में, और एफ्लुएंट्स क्या हो जाएंगे, सेंट हो जाएंगे सेप्टिक टैंक पे। फिर क्या करोगे आप, एडिशन करोगे न्यूट्रिएंट का सेप्टिक टैंक में, उससे क्या होगा, ग्रोथ बैक्टीरिया ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी। उसके बाद में उसके वजह से क्या होगा, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा ऑर्गेनिक वेस्ट का एफ्लुएंट में। फिर जो स्लज प्रोड्यूस होगा उसको आप सेपरेट करोगे, एफ्लुएंट को सेंड करोगे एक्टिवेटेड कार्बन के साथ में, ठीक है ना, और उसको फिल्टर करोगे टू रिमूव एनी कलरिंग मैटर। फिर क्या करोगे, क्लियर ट्रीटेड जो वेस्ट वाटर रहेगा उसको आप ऑब्टेन करोगे, इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ द प्लांट्स ऑन द प्रेमाइसेस। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस,